बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सज्जाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक्स में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और इसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग इनको एलैबोरेट किया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्लस्टर सैम्पलिंग। Number 1, define the population. Number 2, divide the population into clusters. Next है जी, select a sample of clusters. And the last one is measure the entire population of each selected clusters. तो पहला स्टेप है कि decide on a target population and desired sample size. तो इसमें क्लियरली डिफाइन द पॉपुलेशन यू वांट टू गैदर डाटा फ्रॉम, कि जिस पॉपुलेशन से आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं उसको क्लियरली डिफाइन करेंगे। दूसरा स्टेप जो है वो है डिवाइड द टारगेट पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो इसमें क्या होता है जी, मेक श्योर each cluster you create represent the entire target population, and next है कि the clusters should also be diverse, जैसा कि mutually exclusive. Each cluster should represent every possible characteristics of the target population. और इसी स्टेप में नेक्स्ट देखा जाता है कि ensure that the clusters don't occur at the same time, they should not overlap. तीसरा स्टेप है select clusters using methods of random selection while keeping in mind the desired sample size. When the clusters represent the target population, you can imitate simple random sampling. This will ensure the validity of the research results. And the fourth step is collect data from the final sample group. Select the way you want to collect data and conduct your research. तो ये चार स्टेप्स हैं क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए। अब हम देखेंगे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। पहला एडवांटेज है ईज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, यानी क्लस्टर सैम्पलिंग इज इजियर टू इंप्लीमेंट कंपेयर टू अदर सैम्पलिंग मेथड्स बिकॉज इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन। और दूसरा इसका एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड because it reduces the cost of data collection compared to other sampling methods that require a comprehensive list of the population. तीसरा एडवांटेज है representation of heterogeneity. Cluster sampling can be used to represent different subgroups within a population, making it an effective method for कैप्चरिंग द डाइवर्सिटी विद इन अ पॉपुलेशन। और चौथा एडवांटेज है कि बेटर फॉर हार्ड टू रीच पॉपुलेशंस। क्लस्टर सैम्पलिंग इज इफेक्टिव फॉर पॉपुलेशंस दैट आर डिफिकल्ट टू रीच सच एज रिमोट और रूरल एरियाज बिकॉज इट अलाउज द रिसर्चर्स टू कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशंस। कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है सैम्पलिंग एरर।
cluster sampling is subject to sampling error, which means that the results may not be representative of the population if the clusters are not chosen randomly or if the clusters are not representative of the population. और दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो है इंक्रीज्ड वेरिएंस. द वेरिएंस इन क्लस्टर सैंपलिंग इज यूजुअली हायर कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, मेकिंग इट अ लेस प्रिसाइज मेथड ऑफ एस्टिमेशन. इसके बाद नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है बायस. क्लस्टर सैंपलिंग कैन बी बायस्ड if the clusters are not selected randomly or if the selection process is not representative of the population. और next जो disadvantage है वो है limited generalizability. Cluster sampling is limited in terms of generalizability because the results may only be applicable to the specific clusters selected and not to the entire population. तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे. ये थी आज की वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस. प्लीज कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके.